Hi guys, welcome back to my channel. Today's topic is the narrative question for CSWIP 3.2 exam. This is very important. So this video I will explain in Hindi. So this is my first video in Hindi because so many people are asking me to make a video in Hindi. So narrative वन क्या होता है? Narrative वन क्या होता है? आपका जो क्वेश्चन है उसको narrative वे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन आपको पहले से एकदम एंड तक आप देखिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन का आंसर का वही आपको समझना है. पहले आप आंसर कैसे देंगे. सो आई विल एक्सप्लेन हियर. You are an SWI who has taken over from an SWI who has been on site for a few months. Mean आप एक सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर हो. आप टेक ओवर किया है एक सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर से जो फ्यू मंथ साइट में काम कर रहा है. सो मीन्स आप दूसरा इंस्पेक्टर का जगह में आप आए हो. उसका बाद आप क्या हुआ इधर में आप देखिए क्या ऑब्जर्वेशन है. इट हैज बिकम ऑब्वियस दैट देयर इज ए कंप्लीट लैक ऑफ मॉडल amongst your inspectors but they do not approach you to discuss any grievance. Means ये फर्स्ट हो गया जो आपका मोनोबल. आप लोगों का इंस्पेक्टर का अंदर में मोनोबल बहुत कम है. ऑल्सो शिकायत भी ठीक से अप्रोच नहीं कर पाता है. तो एज ए सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर व्हाट वुड बी योर अप्रोच. सो इन दिस सिचुएशन आपका अप्रोच क्या होगा. सो आप अंडरस्टैंड हो गया जो क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन. सो आपका आंसर क्या होगा. द लो मॉडल बट एब्सेंस ऑफ ग्रीवेंसेस could arise from. So there is model low means मोनोबल बहुत कम है. शिकायत का भी एब्सेंस है. शिकायत भी नहीं है. काम का कोई शिकायत नहीं है. सो कहां से ये अराइज हो सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट. नो रियल ग्रीवेंसेस मे बी देयर इज कोई शिकायत नहीं है सही से. फियर ऑफ अप्रोच टू द एसडब्ल्यूआई बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी. सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर मींस आपका पर्सनालिटी सही नहीं है. आप डर रहे अप्रोच करूं क्या ना करूं. फियर ऑफ लूजिंग जॉब मींस आप अप्रोच करेगा तो आप जॉब लूज कर सकता है. तो ये चीज इंपॉर्टेंट. आप लो मॉरल एंड एब्सेंस ऑफ ग्रीवेंसेस कहां से अराइज हो रहा है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट 3 रेड लाइन सेंटेंस. सो यू हैव टू आंसर इन दिस वे in this CSWIP 3.2 exam in narrative question. Now what will be the suggested approach. आपका अप्रोच क्या होगा. hold meeting to review recent activities. आपका मीटिंग एक रिव्यू करना पड़ेगा. मीटिंग अरेंज करना पड़ेगा. रिसेंट जो एक्टिविटी चल रहा है उसका ऊपर में. आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम. व्हाट problem is there at site. You have to identify if there is a major problem. कोई major problem है तो आपको identify करना पड़ेगा. seek suggestions to solve the problem. suggestion लेना पड़ेगा आपका welding inspector से कैसे problem solve करना है. assign inspector to help solve the problem. कोई assign inspector means inspector assign करना पड़ेगा new inspector to help the solve the problem. कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. एंड होल्ड फॉलो अप मीटिंग विथ ऑल इन्वॉल्व. सो वन फॉलो अप मीटिंग इज रिक्वायर्ड मीन्स यू आर डूइंग योर अप्रोच करेक्टिव एक्शन एट द टाइम. आपको फॉलो अप भी करना पड़ेगा विथ ऑल इन्वॉल्व मीन्स ऑल इन्वॉल्व पर्सन इन विच डिपार्टमेंट ऑल पीपल आर शुड बी इन देयर मीटिंग. एंड लास्ट इज सो एंथुसियाज्म. आपको उत्साह दिखाना पड़ेगा. So a approach करना है. Suggested approach should be this way. So this will be the answer of this particular question. So you understand how it will be the question. Question will be first
द लो मॉडल बट एब्सेंस ऑफ ग्रीवेंसेस कहां से अराइज हो सकता है. सेकेंड इज सजेस्टेड अप्रोच, आपका अप्रोच क्या होगा. So you understand the first narrative. I will go the second narrative now. Narrative 2. इसमें क्वेश्चन क्या है. You are a SWI responsible for a team of welding inspectors who have been on site for 2 months. Means आप एक सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल हो एक टीम का, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का टीम का जो साइट में काम कर रहा है 2 महीना से. तो 2 महीने से साइट में काम कर रहा है कुछ इंस्पेक्टर का आप सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर हो. तो व्हाट इज द इंसिडेंट. A welding inspector who has been on site for 1 week informs you that the contractor has approached him with an offer of money in return for letting poor welding work pass inspection that has been done. So you see, one welding inspector informed to senior welding inspector that one contractor approached that inspector. Means there is a problem of welding, means poor welding हो गया है आपका साइड में, तो आपको अप्रोच कर रहे हैं मनी. सो दे ऑफर मनी टू रिटर्न फॉर लेटिंग पुअर वेल्डिंग वर्क. मीन्स लेटिंग पुअर वेल्डिंग वर्क इज देयर, खराब वेल्डिंग हो गया है आपको पास कराना है. तो कंट्रैक्टर क्या अप्रोच कर रहा है, मनी अप्रोच कर रहा है. in they given money and you have to pass this welding work. So discuss your possible course of action. So what will be your possible course of action, what will be your action क्या होगा आपका. So understand आपका क्वेश्चन, इधर में क्वेश्चन का क्वेश्चन है एक साइड में खराब वेल्डिंग हुआ है बट वो कंट्रैक्टर बोल रहा है इसको पास कर दो मैं आपको कुछ पैसा दूंगा. सो ये है आपका क्वेश्चन. सो इसका एक्शन क्या होगा एज ए सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर. दिस प्रॉब्लम हैज सीरियस लीगल इम्प्लीकेशन एंड इट मस्ट बी अप्रोच विद कॉजन. मीन्स एक सीरियस प्रॉब्लम है. सो आप इसमें अप्रोच करना पड़ेगा विद कॉजन, विद कॉज का साथ आपको अप्रोच करना पड़ेगा. सो क्या अप्रोच करना पड़ेगा. First is ask the inspector for a brief written report of the approach. Means what contractor जो अप्रोच किया है मनी का वो एक रिटन रिपोर्ट चाहिए इंस्पेक्टर से. Ask the inspector for a brief written report of the approach. Second is identify the items that might be involved. Means कौन सा आइटम है जो इन्वॉल्व है इसका साथ. इट इज वन ऑफ द मनी इज इन्वॉल्व, another maybe some people is involved. So we have to identify करना पड़ेगा items which are involved. Third is inform the SWI supervisor and hold a meeting of supervisor, inspector and SWI. Means आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर का सुपरवाइजर जो है उसको, एंड आपको एक मीटिंग अरेंज करना पड़ेगा सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर और एसडब्ल्यूआई के लिए एक्चुअली क्या अप्रोच हो सकता है. Fourth is assign yourself to the items in question and be especially vigilant for defective work. So you have to assign yourself, means you have to go yourself in that particular item, in that what defective work done in that particular items, and you have to go and check what the defective work has been done. You have to go yourself. Means आपको खुद जाना पड़ेगा, जाके आपको डिफेक्टिव वर्क जो हुआ है वो चेक करना पड़ेगा. चेक करके आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन लेके आना पड़ेगा जो कहां पे एक्चुअली प्रॉब्लम है. Poor welding you have to mark. Transfer the inspector to other work on the project. Means वो इंस्पेक्टर को जो इंस्पेक्टर को बोला है, कॉन्ट्रैक्टर जो इंस्पेक्टर को बोला है वो इंस्पेक्टर को ट्रांसफर करना पड़ेगा फॉर अदर प्रोजेक्ट के लिए. So you understand now second question, how you have to approach
फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको CSWIP 3.2 में एग्जाम का जो क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना पड़ेगा। नाउ नैरेटिव 3, you are a SWI on behalf of a client on a project to build an offshore platform, means there is एक offshore platform बन रहा है, आप है SWI सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर, बिहाफ ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट का बिहाफ में आप है, तो आप क्या डिस्कवर हुआ इधर में, यू डिस्कवर दैट वन ऑफ द वेल्डिंग इंस्पेक्टर्स सप्लाइड फ्रॉम ए डिफरेंट एजेंसी, मीन्स एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर है जो डिफरेंट एजेंसी से सप्लाई किया है, बट हु हैज बीन ऑन साइट फॉर 1 वीक से काम कर रहा है, डज नॉट होल्ड ए वैलिड वेल्डिंग इंस्पेक्टर सर्टिफिकेशन, मीन्स उसका पास वेल्डिंग इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, मीन्स वेल्डिंग इंस्पेक्टर साइट में काम कर रहा है डिफरेंट एजेंसी से, 1 वीक हो गया ऑलरेडी काम कर रहा है, बट उसका पास कोई वेल्डिंग इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। What is your action? Means आपका एक्शन क्या होगा? Same question would be like this way in CSWIP 3.2 exam. So approach will be, so you see कैसे approach होगा? This is problem that need to be corrected. So this is one problem. You need to be corrected. Problem correct कैसे करना पड़ेगा? Remove the inspector and notify his agency. So जो inspector उसका वेल्डिंग सर्टिफिकेट नहीं है उसको रिमूव करना पड़ेगा एंड एजेंसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। सजेस्ट रीसर्टिफिकेशन ऑफ द इंस्पेक्टर, दैट वेल्डिंग इंस्पेक्टर को सजेस्ट करना है आपको रीसर्टिफाई करना पड़ेगा अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। नोटिफाई योर सुपरवाइजर, आपका जो सुपरवाइजर वो सुपरवाइजर को नोटिफाई करना पड़ेगा दैट आपका वेल्डिंग इंस्पेक्टर का पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है बट साइट में काम कर रहा है। आइडेंटिफाई ऑल वर्क दैट वाज कैरिड आउट बाय द नॉन वैलिड इंस्पेक्टर, मींस आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा वर्क, व्हिच वर्क वाज कैरिड आउट बाय द नॉन वैलिड इंस्पेक्टर, मींस जो वर्क कंप्लीट हो गया वही इंस्पेक्टर से जिसका पास वैलिड इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट मीन्स वेल्डिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऑल वर्क वी हैव टू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सब काम को जो वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर किया है। स्टॉप फर्दर वर्क कैरिड आउट बाय नॉन सर्टिफाइड इंस्पेक्टर, सो यू हैव टू चेक कोई वो इंस्पेक्टर का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, वेल्डिंग सर्टिफिकेट नहीं है इंस्पेक्टर, सो आपका काम स्टॉप करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप द वर्क। Carry out all the work done by the non-certified inspector again. So you have to check, means जो इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है वो जो काम किया सेम काम को फिर से करना पड़ेगा by the non-certified inspector again. So non-certified इंस्पेक्टर का साथ जो काम हुआ है फिर से कैरी आउट करना पड़ेगा सब all work. So you understand now third question. This is the way how to answer the question. One is remove the inspector and notify his agency. Second is suggest recertification of the inspector. Third is notify your supervisor. Fourth is identify all work that was carried out by the non-valid inspector. Fourth is stop further work carried out by non-certified inspector. And sixth one, carry out all the work done by the non-certified inspector again. So narrative 4. So narrative 3 you understand, narrative 1, narrative 2, narrative 3. Now narrative 4. This is also very important question. You are a SWI on a pipeline project, means you are a senior welding inspector. आप senior inspector हो, welding inspector, आप एक pipeline project का. So the radiographic interpreter informs you that he believes that the same weld has been radiographed with different weld number on a number of occasions, and the radiographs have been submitted. So what happened? Radiographic interpreter means those are checking the film at TFI. So that radiographic interpreter आपको inform कर रहा है जो हम
सही से बोल रहा है, ये जो रेडियोग्राफ हुआ है ये सेम वेल्ड का हुआ है, बार बार हुआ है, एक दिन नहीं है, बहुत बार सेम वेल्ड का ये लोग रेडियोग्राफी कर रहे हैं एंड सबमिट कर रहे हैं। आपको आप समझ में आ गया। शायद एक जॉइंट में 5 वेल्डिंग है, वेल्ड FW1 मींस फील्ड वेल्ड 1, फील्ड वेल्ड 2, फील्ड वेल्ड 3, फील्ड वेल्ड 4 and the field weld 5. Maybe in field weld 1 to field weld 5 there is 3 field weld 1, 2 and 3, 3 joint is accepted, means 3 joint accepted है but 2 joint accepted नहीं है। वो लोग क्या करता है, वो जो 3 जॉइंट एक्सेप्टेड है उसमें से बहुत बार लेके सबमिट करता है एंड पास कर देता है, वो जो 2 वेल्ड फेल हो गया उसको पास कर देता है। सो सेम जॉइंट का सिर्फ जॉइंट नंबर चेंज कर देता है बट आपका जो रेडियोग्राफ का इमेज सही है वही सेम ही रहता है। सो इसके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इन दिस फैब्रिकेशन इंडस्ट्री और पाइपलाइन इंडस्ट्री, द NDT industry is a very big problem. So state what action you would take. You see, in this situation, you are there, SWI. These things happen. What is your action? आपको क्या करना है? This is a problem that need to be corrected. एक problem है, आपको correct करना पड़ेगा. So recall all radiographs and radiographer certificates. Means all radiograph image for this particular job we have to collect. मीन्स आपको कलेक्ट करना पड़ेगा ऑल रेडियोग्राफ का इमेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर से एंड रेडियोग्राफर सर्टिफिकेट, ऑल्सो रेडियोग्राफर सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए बोलना पड़ेगा। सेकेंड इज नोटिफाई योर सुपरवाइजर, आपका सुपरवाइजर को बोलना पड़ेगा जो ये थिंग्स हैपन, ये थिंग्स हुआ है साइड में। हैव इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन मेड ऑफ ऑल रेडियोग्राफ इन क्वेश्चन, सो यू आपको खुद चेक करना पड़ेगा जो ऑल रेडियोग्राफ इमेज को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, सब मतलब सही से रेडियोग्राफ इमेज को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इफ रेडियोग्राफ्स हैव बीन डुप्लीकेटेड आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ डुप्लीकेशन, मींस आप देख रहे हैं कोई रेडियोग्राफ डुप्लीकेट हुआ है कोई जॉइंट का साथ, मींस FW1 और 2 जॉइंट इज सेम सेम और 1 और 4 जॉइंट सेम सेम, सो आपको आइडेंटिफाई करके आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा जो आपको ये जॉइंट और ये जॉइंट सेम डुप्लीकेट हुआ है। टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा इमीडिएटली इन दिस केस। रिपीट ऑल रिक्वायर्ड रेडियोग्राफ, आपको रेडियोग्राफ करना पड़ेगा जितना जॉइंट का है, मींस आप वो प्रोजेक्ट का और वो लाइन का जितना जॉइंट है, मे बी 100 जॉइंट और 200 जॉइंट, ऑल जॉइंट इट शुड बी रेडियोग्राफ, all joint it should be radiograph. Repeat the radiograph again. It is actually same thing is happen in my experience in Dubai when I am working in Emirates Aluminium, is the same things happen, so I'll not disclose anything. So this is happen and the things are after that it is again the all joint should be again retested. Repeat the radiograph. So understand the question answer how it will be. So you have to answer in this way. Narrative 5. You are a SWI who is required to visit a factory where a number of pressure vessels have just been manufactured and inspected by your inspector team. Means आप एक सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर हो, आपको एक विजिट करना पड़ेगा आपका एक फैक्ट्री में जहाँ पे बॉयलर प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चर होके पड़ा है और मेरे पास ऑलरेडी प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर कर लिया है आपका इंस्पेक्शन टीम। सो आप एज ए सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर द क्लाइंट रिक्वायर्ड द वेसल टू बी साइन अप बाय यू, मींस क्लाइंट बोल रहे हैं ये जो वेसल है आपको साइन अप करके डिस्पैच करना पड़ेगा। So what question do you ask, what information do you require and what random checks do you make before signing up? So before you signing that inspection report, final inspection report, what you need to check? आप क्या question ask करोगे, what information do you require, कौन सा information आपको चाहिए and कौन सा random checks आपको करना है before signing up. This is very important question. You should remember this question
maybe this question will become in your next future exam. So the suggested approach will be request welding engineer to check suitability of steel, weld, etc. against client specification. So you can check your welding engineer. welding engineer को बोलना पड़ेगा भाई आपका स्टील का सर्टिफिकेट, वेल्ड का जो एमटीसी दिखाना, आपका वर्ल्ड विजुअल रिपोर्ट, एनडीटी रिपोर्ट, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू क्रॉस चेक एज पर द क्लाइंट स्पेसिफिकेशन. क्लाइंट स्पेसिफिकेशन का साथ आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा. यूज चेकलिस्ट फॉर एसडब्ल्यूआई एक्शन. आपको एक चेकलिस्ट यूज करना पड़ेगा. एज ए यू कैन चेक द इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान. टेस्ट प्लान इज देयर इज चेकलिस्ट इज देयर, ऑल इंटरेस्टेड. So that checklist you have to follow from the beginning to end, that all these things are happened, work is done, means आपका सब काम हो गया है as per checklist. If SWI action is there some pending work, so we have to means आपका pending जब करना पड़ेगा उसका बाद ही sign up होगा. So use checklist for SWI action. Check a random vessel to ensure complete compliance of certification with client specification. So आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रैंडम वेसल को चेक करना पड़ेगा और एंश्योर करना पड़ेगा जो ये कंप्लायंस हो गया एज पर क्लाइंट स्पेसिफिकेशन. So there should be a compliance certification is there and it should be signed up by also you. So this one, that one is narrative 5. So narrative 5 you understand. Now narrative 6. This is also very important question. You are a SWI who is visit a factory on behalf of the client and you discover in a welded electrode quiver a number of incorrect electrodes among the correct ones which are very different to those specified for the item being welded. Means आप एक सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर हो, आप फैक्ट्री में विजिट किया, आप देख रहे हो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो क्वीवर होता है जहां पे हीटिंग करता है, रॉड हीटिंग करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना पड़ता है. आप देख रहे हो जो वेल्डिंग का एक्चुअली इलेक्ट्रोड रॉड है वो रॉड का साथ दूसरा रॉड भी मिक्सिंग है. So what you will do, but the rod is totally different with the actual one. So the welder stated that he only uses correct electrode, but welder बोल रहे हैं हम मैं only correct electrode वहां से लेके वेल्डिंग कर रहा है, बट जो क्वीवर का अंदर में दोनों इलेक्ट्रोड एक साथ है. सो आपका क्या एक्शन है, स्टेट योर कोर्स ऑफ एक्शन एज ए एसडब्ल्यूआई सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर. आपका एक्शन क्या है? सो सजेस्टेड अप्रोच क्या होगा, स्टॉप ऑल वेल्डिंग वर्क एंड चेक फॉर अदर इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड्स. आपको वेल्डिंग वर्क रिलेटेड पर्टिकुलर विद दिस डब्ल्यूपीएस ऑल द वेल्डिंग वर्क आपको स्टॉप करना पड़ेगा and check करना पड़ेगा incorrect electrode from where it is coming. Investigate the procedures for issue of electrodes. So you have to check, आपको check करना पड़ेगा procedure issue of electrode का जो procedure है वो सही से मान रहा है, मेंटेन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. So वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. थर्ड इज इफ द प्रोसीड्योर इज इनएडिक्वेट. आप देख रहे हैं प्रोसीड्योर का पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, आपको स्टॉप ऑल वेल्डिंग, ऑल वेल्डिंग को आपको स्टॉप करना पड़ेगा एंड क्लाइंट को नोटिफाई करना पड़ेगा. तो दिस थिंग्स आर हैपेंड. इफ द प्रोसीड्योर इज इनएडिक्वेट ऑल्सो identify all welds made by the welder in question. So if you see also procedure is inadequate, procedure में पूरा information नहीं है as per the client specification, then you have to go one by one that particular weld made by that welder. Means वो welder जो weld किया है वो weld को identify करके उसको question करना पड़ेगा. Means वो आपको रिपीट वेल्डिंग करना है नहीं करना है. नाउ आस्क द रिप्लेसमेंट वेल्डर. सो यू हैव टू आस्क, रिप्लेस करना पड़ेगा, वो वेल्डर को रिप्लेस करके दूसरा वेल्डर लेना पड़ेगा. कंसल्ट वेल्डिंग इंजीनियर टू डिटरमाइन करेक्टिव एक्शन. सो दिस इज नॉट आवर वर्क, वी हैव फाइंड द प्रॉब्लम एंड वी थ्रो दिस प्रॉब्लम टू आवर वेल्डिंग इंजीनियर. वेल्डिंग इंजीनियर क्या कर रहा है, वो करेक्टिव एक्शन को चेक कर रहा है. करेक्टिव एक्शन को
डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइन कौन सा करेक्टिव एक्शन लेने से वो सही हो सकता है, तो वो वेल्डिंग इंजीनियर हमको देगा करेक्टिव एक्शन। एंड रिप्लेस ऑल वेल्ड्स मेड बाय दैट वेल्डर, जो वेल्ड किया है वो पर्टिकुलर वेल्डर से वो सब वेल्ड्स को रिप्लेस करके नया वेल्डिंग करना पड़ेगा। सो रिप्लेस ऑल वेल्ड्स मेड बाय द वेल्डर। So you understand now this narrative 1 to narrative 6 is very important and you have to approach in this way. So CSWIP 3.2, if you giving exam in a coming days, so this video will be very helpful for you. So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to get the regular videos so you don't miss out any good videos from when I am uploading here, and you can get the first notification after subscribing. And you can engage with me with Facebook, Twitter and Instagram, and all this link you can go in the description page in the YouTube, so you can go to the details. So thanks a lot. Take care and see you soon in the next video. Thanks a lot.